Hello friends, welcome to PRATHAM Test Prep. I am Ashish Bhargav and here I welcome to each and everyone here for the weekly current affairs quiz. And the purpose to conduct such kind of session is that you will revise all the content what we had studied earlier in the newspaper analysis session, and these things is very important, right? Because as we know that newspaper is the best source to knowing the current affairs, and current affairs sometimes it will be very easy for you to know about the current affairs to revise the content, or at the end you need to solve the questions based on that. So why it is important to know about it? Because the reason behind the current affairs session, or the purpose is to conduct the current affairs session like to solve the MCQs. So you will be familiar to solve such kind of questions. And if you are new in this channel, one request, like please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon. So जितने भी हमारे mentors हैं उनकी आपको notification मिलती रहेगी. चलो, so वीकली करंट अफेयर्स हम बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, लाइक इकॉनमी, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मेनी मोर थिंग्स दैट वी डिस्कस. And make sure that sometimes that the questions that you would not be able to solve, तो आपको इसमें क्या करना है, we have to apply such kind of elimination method. So just try to eliminate as many options as you are using your pre-existing knowledge base. So if you eliminate one, you have 33% of chance of getting it correct. If you eliminate two, you have 50% of chance. If you have eliminate three, you have 100% chance of getting it correct. So just try to eliminate one option at least and then attempt it at any cost. So make sure that you have to such kind of elimination process. और ये कब होगा बच्चे? जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, so you gradually you will see the changes in yourself, so like what kind of intuition that you had developed, and so you just need to inculcate these kind of intuition to solve the questions. So basically I am talking about the temperament, which is important to solve the MCQ. This is very important. Until unless you will not develop such kind of temperament, though that it would be very difficult for you to solve such kind of questions. So here we are, the very first question of is, in which state President of India Draupadi Murmu recently in August 2023 inaugurated the Unmesha International Literature Festival and Utkarsh National Festival of Folk and Tribal Performing Arts. Here is our four option: वेस्ट बंगाल, गुजरात, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश. फटाफट से इसके आंसर करो कि इसमें क्या आंसर होने चाहिए. वी हैव फोर ऑप्शंस: वेस्ट बंगाल, गुजरात, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश. सो एज वी नो अबाउट द folk and tribal performing arts, Draupadi Murmu, she became our first tribal president, and she belongs to Santhal tribal group, which is somewhere prevalent in the Bihar, Jharkhand, some parts of West Bengal. So the final right answer is, the answer is D, Madhya Pradesh. Yes, 4th August 2023 को President of India Draupadi Murmu inaugurated Unmesha International Literature Festival and Utkarsh National Festival of Folk and Tribal Performing Arts to promote inclusivity and cultural diversity at Ravindra Bhavan in Bhopal, Madhya Pradesh. ये जो इवेंट था वो it took place at 3rd to 5th August 2023 as a part of आज़ादी का अमृत महोत्सव organized by मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका. रिसेंटली आपका लिथियम रिजर्व मिला इंडिया में. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिथियम इज ट्रू? Statement 1 is talking about lithium is the heaviest element in the periodic table. Second one, lithium is commonly used in the production of nuclear weapons. Third one, lithium is an essential mineral for the human body. And the fourth one, lithium is a highly reactive metal that easily catches fire in air. देखो आपके जो ईवी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एंड उनमें और आपके जो सेल फोन की बैटरी में भी लिथियम का इज़ वाइड स्प्रेड यूज्ड. और लिथियम ट्रायंगल भी आपको मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बहुत अच्छे से डिटेल मैनर में बता रखी थी. सो आई होप दिस वन इज़ क्लियर फॉर ईच एंड एवरीवन. और बेटा अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप, बिकॉज दे मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस. एनीवे, सो आपका इसमें क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है. सो इट्स अ हाईली रिएक्टिव मेटल, और विच ऑप्शन, सॉरी, so option C is the correct one. So lithium is an essential mineral for the human body, so C is the right answer.
So it is a soft silvery white metal. Under standard condition it is the lightest metal and the lightest solid element. It is highly reactive and flammable and must be stored in the mineral oil. Countries with largest reserve जैसे आपके चिले हो गए, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, और लिथियम ट्रायंगल आपका चिले, अर्जेंटीना एंड बोलिविया. बात करें रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश लिथियम एंड फर रिसोर्सेज ऑफ about 6 million tons in the Salal Himalaya area of UT of Jammu and Kashmir. And lithium reserves जो है were also discovered on Rewant Hill in Degana in Rajasthan. Nagaur district, ये नगौर डिस्ट्रिक्ट बेटा आपका वही है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को लॉन्च किया गया था द वेरी फर्स्ट टाइम. आपको इसमें देखा होगा बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज देयर. सो नगौर वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन आवर कंट्री इन राजस्थान जहां पर कि आपको पंचायती राज 3 tier सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड. सो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट नगौर डिस्ट्रिक्ट नीड टू कीप इन माइंड इन द वेयर द पंचायती राज सिस्टम वॉज 3 tier सिस्टम वॉज प्रिवेल. चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन. In which life insurance company had recently in August 2023 launched a guarantee of life dreams gold plan to provide policy holders with a regular long term income option? पहला ऑप्शन बेटा आपका टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड वन SBI लाइफ इंश्योरेंस, C1 इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एंड D1 इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस. सो द राइट आंसर इज रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या किया, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी उसमें इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस इसका राइट आंसर है. एंड 31st July 2023 इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लॉन्च अ न्यू प्लान इंडिया फर्स्ट लाइफ गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स गोल्ड स्कीम इसे कहते हैं बच्चे. एंड अ नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान इज डिजाइन टू प्रोवाइड policy holders with a regular long term income options. So इसमें आपका the plan offers premium paying terms PPT with option of 6 years, 8 years, 10 years for a policy tenure of 30 years or 40 years. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. आपका क्या है, which country has recently in August 2023 delivered the air launched spike non line of sights NLOS anti-tank guided missile ATGM to Indian Air Force? France, Japan, Russia, Israel. And you have to keep an eye on that. Sometimes आपके न्यूज़पेपर में आपके कई बार फुल फॉर्म भी पूछते हैं like what is NLOS stand for, which is called launch spike non line of sight. And what is ATGM is, which is anti-tank guided missile to Indian Air Force. So right answer is Israel is the right answer. So Indian Air Force ने receive किया air launched spike non line of sight anti-tank guided missile from Israel, और Israel की capital है Jerusalem, which can hit targets up to 50 km from a helicopter and 32 km from the ground. And the NLOS missile will be integrated with the fleet of Russian origin Mi-117 V5 helicopters manufactured by Kazan Helicopters. It was designed by the Israeli company Rafael Advanced Defense System. It is available in various configurations including man-portable, vehicle-launched and helicopter-launched variants. Next one. Chandrayaan 3 mission has been launched. Who is the project director of the mission? K. Sivan, S. Somnath, P. Veera Muttawal and C. Venugopal. So P. Veera Muttawal. So P. Veera Muttawal Indian Space Research Organization has successfully launched India's third moon missile mission Chandrayaan 3, and it was launched from the launch vehicle LMV-3 from the Satish Dhawan Space Center. P. Veera Muttawal is the project director of Chandrayaan 3 spacecraft and its mission of soft landing on the moon. He was also involved in the Chandrayaan 2 mission in 2019.
Chalo. Which country's goalkeeper Gingloi Buffon has recently in August 2023 announced his retirement from football? Portugal, Argentina, Italy and Spain. So the right answer is Italy. On 2nd August 2023, Italian goalkeeper Gingloi Buffon, 45 years old, announced his retirement from football. He was part of Federation International the Football Association FIFA World Cup winning Italian team in 2006 in Germany against France. So he retired from international football in 2018 after Italy failed to qualify for the 2018 FIFA World Cup in Russia. He was awarded the FIFA's Best Man Goalkeeper Award in 2017. He earned nicknames including Superman and Gigi. International Union for Conservation of Nature (IUCN) Species Survival Commission (SSC) has recently in August 2023 signed an MOU Memorandum of Understanding with the Wildlife Trust of India (WTI) to set up the first ever regional center for the species survival in India, and this will be the Dash Center for Species Survival in the world and the first in South Asia. So the right answer is A option, 10th one. So on 2nd August 2023, a memorandum of understanding MOU was signed between International Union for Conservation of Nature (IUCN), Species Survival Commission (SSC) and the Wildlife Trust of India (WTI) to set up the first ever regional center for species survival in India. The MOU aims to enhance conservation efforts by wildlife experts and specialist groups and safeguard the rich biodiversity of India. This will be the 10th CSS in the world and the first of its kind in South Asia. In August 2023, the National Health Authority (NHA) extended its Digital Health Incentive Scheme (DHIS) under the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) till 31st October 2023, 30th November 2023, 31st January 2024 and 31st December 2023. So D is the right answer, 31st December 2023. So on August 5, 2023, the National Health Authority (NHA) extended its Digital Health Incentive Schemes (DHIS) under the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) till the 31st December 2023. It was launched with effect from January 1st, 2023. DHIS offers incentives to up to 4 crore to hospitals and diagnosis labs and digital solution companies. Moving to the next one, who has recently in July 23 became India's 83rd chess grandmaster by earning his 3rd GM norm in the 9th round of Bile Chess Festival Master Tournament 2023 held in Switzerland. Aditya S. Samant, Bipula Praneeth, Sayanathan Das and Vignesh NR. So its right answer is Aditya S. Samant, which is 17 years old, an international master, became India's 83rd chess grandmaster by earning his 3rd GM norms against Aryan Chopra in the 9th round of Bile Chess Festival Master Tournament that was held in Switzerland. Next one, in which city PM Narendra Modi recently inaugurated a futuristic international exhibition cum convention center, which is called IECC,
complex Bharat Mandapam to host the G20 leaders meeting? Bangalore, Karnataka, New Delhi, Gandhinagar, Gujarat, Noida, Uttar Pradesh. So the right answer is option Delhi. So it was organized in the Pragati Maidan in New Delhi. So the 26th July 2023, Prime Minister Modi inaugurated a futuristic international exhibition cum convention center, the revamped India Trade Promotion Organization complex, also known as Pragati Maidan complex, and also unveiled the G20 coin, the stamp at Pragati Maidan in New Delhi. Which company has recently, in July 2023, launched Money Saver Export account for Indian exporters to save 50% on overseas bank transfer? PhonePe, ReservePay, Paytm, BharatPay. So, ReservePay, a fintech company, announced the launch of Money Saver Export account built specifically for a small and mid-size exporter by offering up to 50% saving on international bank transfer for the Indian exporters. Who has been appointed as the next ambassador of India to Lithuania? Alok Sinha, Devesh Uttam, Shweta Anand and Rajiv Kumar. So here are four options is there. Who has been appointed as the next ambassador of India to Lithuania? Alok Sinha, Devesh Uttam, Shweta Anand and Rajiv Kumar, and now the answer is Devesh Uttam. So recently Ministry of External Affairs has appointed Indian diplomat Devesh Uttam as the next ambassador of India to Lithuania, and Devesh Uttam is an IFS officer which is Indian Foreign Service in the year 2003, and he is working as a joint secretary in the Ministry of External Affairs. Next one asking about who has recently elected as a new chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change. And as we know that we have discussed many times about IPCC, which is called Intergovernmental Panel on Climate Change. Rajendra K. Pachauri, India; Robert Watson, like United States of America; Hoensung Lee, South Korea; and James Ferguson, SK is United Kingdom. So D is the right answer. 26 July 2023, James Ferguson, Jim Skia of the United States Kingdom, was elected as a new chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. What was the theme of World Hepatitis Day, WHD 2023, that was observed across the globe on 28 July 2023 by the World Health Organization? One life, one liver, bringing hepatitis care closer to you, hepatitis can't wait, and hepatitis free future. So is the right answer is A, one life, one liver. A is the right answer. In which state the President Draupadi Murmu has recently laid the foundation stone for the Divine Lighthouse, a
प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय PVKIVV. The state, the options are Odisha, West Bengal, Andhra Pradesh and Maharashtra. That kind of questions is important, as we know that, because ये जो आपके MCQs होते हैं directly taken from the Hindu और Indian Express, and ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं, why it is important, because आपको एक आइडिया और आपको एक प्रैक्टिस करने को मिलती है, राइट? सो and practice makes the man perfect. So as we know that only reading and gathering the content is not enough. You have to practice yourself. कितने क्वेश्चंस आपसे सही हो रहे हैं. कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो you on that time you would be not familiar to solve, right? So but you need to apply such kind of POE, which is called process of elimination. So ये जो टेक्निक्स होती है process of elimination की, so that कि आप उसमें familiar होते हैं, यार कुछ तो है, कुछ इसमें क्या B और D नहीं हो सकते, A and C cannot be the options, so we are left with the B and D, we are left with A or C. So that kind of techniques is help you out. डोंट थिंक अबाउट यार ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं. एग्जाम में तुम्हारे पास कभी ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिसमें तुम किसी भी एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ तुम जाओ और यू फील यार सब मेरे को ना सब पता है. दैट काइंड ऑफ फीलिंग विल नॉट हैव, राइट? कभी नहीं होगा ऐसा कि आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बिकॉज किसी भी एग्जाम अगर आप देखो तो आपको कट ऑफ आपका 100 आउट ऑफ 100 नहीं होती है, राइट? किसी भी एग्जाम में नहीं होती कट ऑफ 100 आउट ऑफ 100. जो आप देख रहे हो एग्जाम में 99%, 98%, दैट्स अ परसेंटाइल. तो इट्स नॉट परसेंट, वो परसेंटाइल है, वो आपका कट ऑफ नहीं है कि इतने मार्क्स में इतने मार्क्स चाहिए होगा. सो ये तो आप सोचना बंद कर दो कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे आपको सब पता होनी चाहिए. जो रैंक 1 होता है ना, वो रैंक 1 के भी आपको आप देखोगे मार्क्स ना, वो आपको कभी नहीं, ये हमेशा शेयर करता है कि रैंक 1 के भी मार्क्स आपके कभी भी उस केस में वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरे ना सारे क्वेश्चन मुझे पता थे. उसे इतना पता था कि उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, उसे इतना पता था जिस एग्ज़ाम हु दे वर प्रिपेयरिंग फॉर वो उसको क्लियर कर सकता है, उसको क्रैक कर सकता है. इतनी नॉलेज अपने पास होनी चाहिए सो दैट कि वुड बी वेरी फैमिलियर टू सॉल्व इट. ये नहीं कि यार आप सोचो कि नहीं आप कुछ ऐसा कर दो जिससे सारे क्वेश्चंस मेरे को आना चाहिए, तो बेटा वो मेरे लाइफ में भी कभी नहीं हुआ, वो तुम्हारे लाइफ में कभी नहीं आएगा. तो चीज़ें बहुत हार्श लग सकती हैं ये चीज़ मेरी, बट ये चीज़ें फैक्ट है. तो कभी आप ये मत सोचो कि मेरे पास जो क्वेश्चन है बस सबका आंसर मुझे पता होना चाहिए, बट हाँ ट्राई करना सीखो. ट्राई इज़ द की ऑफ एवरीथिंग. सो इफ़ यू हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन एटलीस्ट यू विल गॉट टू नो कि यार इसमें क्या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ. जब आप एक पहलवान से लड़ते हो ना, आपको पता होता है कि यार ये ना इस पहलवान से मैं हार जाऊंगा, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पर आप लड़ के ना सीख जाते हो कि आप इससे एग्जैक्टली फाइट करते कैसे, इसका क्या लूप होल्स है जहाँ पे मैं इसको वॉर कर सकता हूँ. सो थिंक अबाउट ऑलवेज पॉजिटिव थिंग्स कि यार ये चीज़ें पॉसिबल है, राइट? एनीवे चलो इसके आंसर बताओ गाइस, इसके क्या आंसर होने चाहिए. डिवाइन लाइट हाउस ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्या होना चाहिए राइट आंसर इसके? इसके राइट आंसर आपके क्या है? इस ओडिशा. सो 27 जुलाई 2023 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डिवाइन लाइट हाउस फॉर द प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय PBKIVV एट दाशबातिया तमनदाव भुवनेश्वर, जो कैपिटल आपकी ओडिशा की. ड्यूरिंग अ 3rd डे विजिट टू ओडिशा, वैसे भी शी बिलोंग्स टू ओडिशा स्टेट, और जो प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया 2023 थीम ऑफ PBKIVV द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज फॉर कंडक्टिंग नेशनल सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस. चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से. उस बैंक का नाम बताओ जिसने रिसेंटली अभी इंक्लूड किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स अंडर शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट 1934. मिजुहो बैंक, होंगहाई बैंक, माइट बी कोरियन लैंग्वेज, उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, बट आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में देता हूँ बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, दे आर फेमिलियर विद द बोथ ऑफ द लैंग्वेज. सो द मेन पर्पस दैट कि आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, सी इंग्लिश हो या हिंदी हो, दैट शुड बी द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? सो कई बार कुछ ऑडियंस होते हैं यूट्यूब पे जो कहते हैं सर आप हिंदी बोला करो, तो हिंदी में आप इसलिए दोनों लैंग्वेज यूज करता हूँ. सो प्रेफरली आई यूज़ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ ऑफ द लैंग्वेज, सो यू गैस बी फैमिलियर ये दोनों लैंग्वेज में यूज़ करने, और दोनों लैंग्वेज में आपको जो भी पसंद हो आप उसे यूज़ कर सकते हो. अब कोरियन लैंग्वेज में इसकी प्रोनाउंसिएशन माइट भी कुछ और हो, बट यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपकी यही है. नोंग हाइक बैंक, सन कॉर्प बैंक एंड कॉमनवेल्थ बैंक ऑस्ट्रेलिया. बताओ इसमें से क्या है जो रिसेंटली अभी शेड्यूल बैंक में ऐड किया RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. ट्राई करो. सो ट्राई इट.
ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस. अगर मुझे 2 स्टूडेंट्स में से किसी एक को पसंद करना हो, वन हु फेल्ड, वन हु ट्राइड एंड फेल, तो ऑब्वियस मैं फर्स्ट को लाइक करूँगा, वन हु ट्राइड, बिकॉज एज आई नो दैट कि एटलीस्ट उसने ट्राई तो करा, उसे पता होगा कि एटलीस्ट मैंने क्या गलती की है. बट जब आप जाओ लड़ोगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, आप कैसे जानोगे कि इसमें मैं कहाँ पे फंस रहा हूँ. ठीक है, चलो. So anyway, the right answer is option B. So Reserve Bank of India ने Nong Hai Bank, the second schedule to the Reserve Bank of India Act 1934, and as per the RBI notification, Nong Hai Bank has been officially included in the second schedule of RBI Act 1934 and published in the Gazette of India, Part 3rd, Section 4. Next one है उस कंपनी का नाम बताना. Name the company that had recently in July signed an MOU, which is Memorandum of Understanding, with Indian Railway Finance Corporation (IRFC) to collaborate, develop rail infrastructure project. आपको पता है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पे ओडिशा में जहाँ पे हुआ था वहाँ पे कवच सिस्टम था. ठीक है, कवच, जिसके बारे में हम न्यूज़पेपर एनालिसिस में वी हैव डिस्कस इन अ डिटेल मैनर. इसीलिए उस न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है उसे आप प्लीज़ मॉर्निंग में देखो 11:30. अगर आप उस टाइम आप स्कूल में होते हैं तो प्लीज़ आप शाम के टाइम में उसे आप देख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको कुछ क्वेरी हो वहाँ पूछ सकते हैं. अदरवाइज़ प्रथम टेस्ट प्रेप का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं. आर इंटायर मेंबर्स आर विलिंग टू हेल्प यू 24/7. कभी भी आप रिप्लाई कर, आपको जो भी क्वेश्चंस, डाउट है, क्वेरी आप पूछो, आपको रिप्लाई हमारे साइड से आ जाएगा. राइट, कि आपको क्या चीज़ें हैं एंड हु कैन बी द कंसर्न पर्सन टू होम यू नीड टू टॉक. चलो, इसमें A, B, C, D 4 ऑप्शन है, तो बताओ इसमें क्या होने चाहिए. राइट्स, रेलटेल, रेल विकास, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड. सो इसका राइट आंसर है राइट्स. सो फॉर्मली इसको क्या कहते थे, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट एंड शेड्यूल A सेंट्रल बैंक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज signed a memorandum of understanding MOU with Indian Railway Finance Corporation IRFC to explore possibilities of mutual collaboration in the railway ecosystem and the transport infrastructure sector. चलो, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली इन जुलाई 2023 लॉन्च बाय स्पेस एक्स. So B is the right answer. Hooks Jupiter 3 mission. 28 जुलाई 2023 को स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन SpaceX Falcon Heavy rocket launch in uses Jupiter 3 missions, the world largest commercial mission, और इसको Geosynchronous Transfer Orbit GTO form launch 39 से किया गया at Kennedy Space Center in Florida, which is USA. And this marked Falcon Heavy's 7th launch since its debut in 2018. Next है आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर has nominated from which state for the upcoming राज्यसभा elections? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड केरला. सो फाइनल इसका राइट आंसर क्या है अपना, इज गुजरात. सो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर फाइल हिज नॉमिनेशन फ्रॉम गांधीनगर गुजरात, जो गुजरात की कैपिटल है. और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया शेड्यूल ऑफ इलेक्शन टू बी हेल्ड इन ऑन जुलाई 24 ऑन राज्यसभा सीट्स इन गोवा, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट जुलाई 2023 Dash became the largest PSU refinery single location in India for 2022 and 2023. Mangaluru Refinery and Petrochemical Limited, Oil and Natural Gas Corporation Limited, Hindustan Petroleum Limited and Indian Oil Corporation Limited.
So the right answer is Mangaluru Refinery and Petrochemical Limited. Which payment bank has recently in July 2023 approved the proposal for the transition of the bank into a small finance bank? देखो एक हमारा पेमेंट बैंक होता है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो पहले थी, और बैंक में जो आपको ATMs वगैरह होते हैं और UPI होते हैं जो हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी यूज़ करते हैं, उसमें होती है आपकी QR कोड विच इज़ कॉल्ड क्विक रिस्पॉन्स. QR का मतलब क्विक रिस्पॉन्स. एंड उसमें जो बैंक होते हैं आपके, उसमें बैंक के साथ आपका जो इस UPI को रेगुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड NPCI विच इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये पूछ रहा है आपसे कि इसके राइट आंसर क्या होने चाहिए. सो इसका है फिनो पेमेंट बैंक्स. 28 जुलाई 2023 को द बोर्ड ऑफ फिनो पेमेंट्स बैंक ऑफ fully owned subsidiary of Fino Paytech Limited approved the proposal for the transition of bank into a small finance bank SFB license. The board has also formed a committee to explore the possibilities, a group of corporate restructuring and evaluate the implications and other consideration. Lord Hanuman has been declared as the official mascot of which championship? देखो ऐसे में देखो लॉर्ड हनुमान इज हिंदू गॉड, राइट. ऐसे में आपका वर्ल्ड वाला जो वर्ड है ये तो नहीं होगा, तो ऑब्वियस डी को तुमने क्या करना है, तुमने एलिमिनेट करना है. तो आप सिंपली डी को एलिमिनेट कर सकते हो बहुत ईजिली. वी आर लेफ्ट विद द A, B and C ऑप्शन. एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, क्रिकेट एशिया कप एंड डेविस कप. सो ऑब्वियस इसका राइट आंसर क्या होगा, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप. So Lord Hanuman has been announced as the official mascot of Asian Athletics Championship. It is being organized on 50th anniversary of the establishment of the Asian Athletics Federation. चलो next one है, name the company that has recently became the first member from India to join the Asia Transition Finance Study Group, ATFSG. NTPC, which is the National Thermal Power Corporation, Power Grid Corporation of India, National Hydroelectric Power Corporation, Power Finance Corporation Limited. So the right answer is option D, Power Finance Corporation Limited. Name the sports personality who has recently won the Formula MSC Cruise Belgian Grand Prix 2023. Sergio Perez, Charles Leclerc, Max Verstappen and Fernando Alonso. C is the right answer. When was the United Nations UN World Day Against Trafficking in Person 2023 observed across the globe? 27th July 2023, 31st July, 28th July and 30th July. So obvious right answer is 30th July. To raise awareness about the situation of human trafficking victims to promote and protect their rights. और जब भी कभी आपको डे एंड डेट्स हो, डे एंड डेट्स मेक श्योर दैट कि यू हैव टू बी अवेयर अबाउट कि लाइक आपका उसमें थीम क्या है, राइट. सो इसका थीम है रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड. एंड द फर्स्ट एवर वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 30th July 2014. Name the company that has recently introduced two new cutting-edge payment devices, the Pocket Soundbox and Music Soundbox.
free recharge, phone pay, Paytm, Bharat Pay. On July 31st, 2023, Paytm owned by 197 Communication Limited, 197 Communication जो है आपका, that introduced two new cutting edge payment device, the payment pocket soundbox and payment music soundbox. Both devices are equipped with the 4G capabilities, G which means generation, and providing enhanced convenience for on-go merchant. About Paytm pocket soundbox, it is the first of its kind made in India. Portable device as small as debit card to empower on-the-go merchants with instant audio payment alerts. Next है यहाँ पे recently elected as a board of directors and a constituency director of BRIC, New Development Bank NDB. That is Thuraiya Hamid Al Shami. BRICS New Development Bank NDB has elected Thuraiya Hamid Al Shami, Director of International Financial Relations and Organization Department at the United Arab Emirates Ministry of Finance, as a member of its board of directors and constituency director. In which countries the first IIT campus outside India will be set up? Kenya, South Africa, Egypt and Tanzania. Tanzania. So India and Tanzania have signed an MOU for setting up a new campus of IIT Madras. It is the first IIT campus to be established outside India. Union Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship Dharmendra Pradhan has described this decision as historic. Tanzania is an East African country. Its capital is Dodoma. July 23, England के cricketer announced retirement from all forms of cricket, while Moeen Ali confirmed his Test cricket retirement after the end of Ashes Test series. James Mitchell Anderson, Ben Matthew Duckett, Stuart Christopher John Broad and Jack Crowley. Answer C, Stuart Christopher John Broad. Who authored the book Kargil, Ek Yatra Ki Jibani, that was released by the Union Minister of State for Defence of India, Ajay Bhatt, in July 2023. So, we have to think who authored the book Kargil, Ek Yatra Ki Jibani, that was released by Union Minister of State for Defence of India, which is Ajay Bhatt, in July 2023. दुर्जय दत्ता इज डी आंसर. आओ देखो यहाँ पे अजय भट्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रिलीज द बुक एंड इलस्ट्रेशन टाइटल कारगिल एक यात्रा की जुबानी, हिंदी एडिशन, authored by Rishi Raj at the Constitution Club of India, New Delhi, and the book which pays tribute to the martyrs of Kargil War was published by Prabhat Prakashan. बेटा कारगिल वॉर कब हुई थी? इन द ईयर ऑफ 1999. और ये बुक हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ कारगिल विजय दिवस एंड गिविंग रिच ट्रिब्यूट्स द ब्रेव सोल्जर्स. Which is the most peaceful country in the world according to the Global Peace Index 2023? Denmark, Ireland, New Zealand and Iceland. एंड ऑब्वियस ये राइट आंसर है आइसलैंड. और यहाँ पे आपका जेंडर इंडेक्स में ये कौन सा रैंक 1 पे है, रैंक 2 और रैंक 3. ठीक है, इन यहाँ पे ये रैंक 1 पे है. रिसेंटली ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिलीज हुआ अंडर द रैंकिंग 163 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड. इस रैंकिंग के हिसाब से आइसलैंड इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द डेटा फॉर द ईयर 2022 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस.
और ये जो रिपोर्ट है रिलीज़ करता है IEP विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। देखो जहाँ भी आपका डेटा होता है, जहाँ भी आपका इंडेक्स है, so what kind of important takeaways you should know about it, about index? First thing that you should be aware about that who released this index, and second thing that what is the rank in India, इंडिया की रैंक क्या है इसमें, अपना प्यारा देश भारत इसकी रैंक क्या है, and the third thing that you should know about the lowest country in the list and the highest country in the list. So there are around 3 to 4 things because आप previous CLAT के questions देखो, so these things are important wherever the index is talking about. So Global Peace Index 2022 ranking according to the report, Afghanistan is the most troubled country in the world. वैसे बहुत परेशानी है अफगानिस्तान में. नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछ रखा है विच कंट्री हैज बिकम द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO. इसकी समिट सभी इंडिया में ही हुई थी. श्रीलंका, बेलारूस, मंगोलिया, ईरान. So we have 4 options: Sri Lanka, Belarus, Mongolia and Iran. 4 options. तो इसका राइट आंसर ईरान ने फॉर्मली बिकेम द फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे प्रिसाइड किया ओवर SCO समिट्स ऑन ट्यूसडे, एक्सटेंडेड द बेस्ट विश टू ईरान. अभी तक SCO में कितने मेंबर्स थे? यहाँ पे 8 मेंबर्स थे, जिसमें कि चाइना है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है. और SCO को फॉर्म किया गया था 2001 में एंड द पर्पस क्या था इसका? इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करना. एंड इंडिया जो मेंबर बनता है 2017 में, इंडिया बिकेम इट्स मेंबर इन द ईयर ऑफ 2017. नेक्स्ट वन आस्किंग अबाउट विच स्टेट गवर्नमेंट had recently in July 2023 collaborated with the United Nations Population Fund UNFPA to launch Just Ask, artificial intelligence enabled chatbot for the adolescent young adults on sexual and reproductive health and rights. SRHR, Andhra Pradesh, West Bengal, Madhya Pradesh and Maharashtra. इसका राइट आंसर है सी, मध्य प्रदेश. United Nations Population Fund UNFPA, formerly known as the United Nations Fund for the Population's activities in collaboration with the National Health Mission NHM and the Department of Public Health and Family Welfare, Government of Madhya Pradesh MP, launched an artificial intelligence enabled chatbot called Just Ask, खुल के पूछो in Hindi, for the adolescent and young adults which was in the year 15 to 29 years in India to explore information and become aware of the issues related to sexual and reproductive health and rights. SRHR. And ये जो chatbot है आपका, that will equip, empower and educate them about the need for accurate and accessible information on the social issues. And the chatbot has been developed by UNFPA, which is called United Nations Population Fund Sexual and Reproductive Health Experts. UN की एजेंसी है जिनका ये chatbot है. नेक्स्ट वन, जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया न्यू गाइडलाइंस टू नेम एज गाइडलाइंस फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2023 फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके लिए कि न्यू गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब अ मिनिमम एज ऑफ डैश फॉर अप्लाइंग फॉर द सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन एंड मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ स्टैंडिंग मेनली इन द सुप्रीम कोर्ट. और वो क्या है? 45 years. Yes, 45 years is the right answer. Supreme Court of India ने introduce किया new guidelines और guidelines for the designation of senior advocate by Supreme Court of India 2023. For the designation of senior advocates practicing in the Supreme Court of India, it replaced the guidelines issued in 2018. As new guidelines have prescribed a minimum age of 45 years for applying for the senior advocate designations and minimum of 10 years of standing mainly in the Supreme Court. Under whose chairmanship is the 23rd summit of the Shanghai Cooperation Organization? India, Pakistan, China, Russia.
So India this year 23rd Summits of Shanghai Cooperation Organization is being organized under the chairmanship of India. Prime Minister Modi ने preside करेंगे over 23rd summits of the heads of the state of SCO Council. Iran, Belarus and Mongolia have been invited as the observers. The theme of this summit is SCO Secure, derived from the acronym given by the Prime Minister as 2018 SCO Quindago Summit. Name the fintech company that had recently in July 2023 collaborated with the National Payment Corporation of India (NPCI) to introduce RuPay credit card based unified payment interface UPI payments. CRED, PhonePe, ReservePay and Paytm. CRED, a Bangalore, Karnataka based fintech company in collaboration with National Payment Corporation of India (NPCI), introduced RuPay credit card based unified payment interface payment for the credit members. Multiple payments options जो होते हैं UPI में, which is called unified payment interface, will be now available for the credit members, such as जैसे linking their RuPay credit card peer to peer, scan and pay, and paying on online merchants. Which company signed an MOU with Brookfield Asset Management to manufacture renewable energy and decarbonization equipment in Australia? So the right answer is Reliance Industry Limited. Which country has become the first country in the world to ban thin plastic bags? India, USA, New Zealand and Australia. New Zealand has become the first country in the world to ban thin plastic bags. In New Zealand, these plastic bags were used for fruits and vegetables in supermarkets. And the government is expanding the campaign against single-use plastic, which was launched in 2019. Which state government has recently in August 2023 launched LEAP, Launch, Empowered, Accelerate, Prosper Co-workers membership card? Andhra, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. The right answer आपका Kerala is the right answer. Which technology company has launched Thread app? The answer आपका option B. Meta, एक parent company है Facebook, Instagram and WhatsApp, newly developed Threads app intended to rival Twitter. Recently it was announced that it will not be released in the European Union at present, and regulatory concerns are preventing the app from being launched in the EU. So guys, this was the last question, but not the least, and if you have any questions, so please discuss and let me know in the comment section. And if you have any questions regarding this, please let me know in the comment section as well. And as we know that we have uploaded lots of mock on our PSIS, which is for our paid student, and बाकी हमारे वेबसाइट पे भी जो questions हैं उसे practice करने की कोशिश करें. And because gradually you will see the changes in yourself कि जब आप question solve करते हैं तो you have such kind of techniques, you have developed such kind of temperament जो exam के लिए बहुत 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 ज़्यादा important है. And I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions, let me know in the comment section. और इस session में आपको कैसे लगी please हमें ज़रूर बताएं. And we'll meet you in the Monday session for the daily newspaper analysis. Until then, bye bye and take care. अपना ख्याल रखें. We'll meet you on the Monday for the newspaper analysis session. Till then, bye bye and take care. अपना ख्याल रखें.